Good morning and Jai Hind. It is Operation Vijay Divas, the Kargil Vijay Divas anniversary, and a very, very warm welcome to all of you to this special broadcast. Now, Kargil Vijay Divas is one of the most important days in the calendar of India. It is a day when the country comes together to remember our heroes, both fallen and those who are still alive. The men who gave up their lives for the country, and the men who continue to live with the tales that they will carry to the end of their lives of both valor and vulnerability. Lives lived that have always put the country before self. Now, as many of you know, it has been the great privilege and honor of my life to have had the opportunity to report from the front line of the Kargil War. I was a young reporter, only in my 20s, but the men I was reporting on were also in their 20s, whether it was an interview with then Captain Vikram Batra, known as Sher Shah, who said "Ye dil manghe more" in that interview to me, or looking at how India took back Tiger Hill. This was the most transformative assignment of my life. It has also been the most transformative military conversation in India's national discourse, a war that changed how India looks at the military and at our soldiers, a much needed course correction in actually creating a subculture of military history. But is it enough? Will the future generations know the stories of Kargil? Is it important to shed a light on so many stories that actually haven't made it to the national headlines? On this program today, we will be bringing you Gallantry Award winners and their stories from all over the country, both those who are still alive, thankfully with us, to share what they experienced, but also to their families who are no less heroes, because think of sending your loved one into battle and not knowing whether they will come back. Think of losing your son, your father, your brother, someone you love to battle, and then proudly making peace with that life. Let me introduce our very special guests on this program today. First up is going to be the Sutradhar of this conversation, soldier and storyteller, Major Akhil Pratap. Let's welcome him to the program. Major Akhil Pratap is a fantastic host of a fantastic podcast on military history on Audible and Amazon, and we'll hear about that later in the program. But he'll be literally introducing every single story in this very special broadcast this evening. Also welcoming to the program is Parveena Akhtar. Parveena is the daughter of Lance Naik Ghulam Mohammad Khan, a Veer Chakra, a Gallantry Award winner, and it's my privilege to welcome her to the program today. She is, of course, from Kashmir. Joining us from Maharashtra today is Arjun Kulkarni. Arjun is the son of Colonel Rajesh Kulkarni. Colonel Kulkarni was a brave heart of the Kargil War and is still a serving officer. Arjun is here as the proud son of his father to share his experiences and what he went through or what the family went through. Also welcoming to the program now is Satpal Singh, sir. Satpal Singh is a Veer Chakra awardee. He is a hero, a tiger, as it were, of Tiger Hill, single-handedly actually eliminating the man who was given Pakistan's highest military recognition. And it is a great pleasure to see him. If you're wondering why he's called ASI Satpal Singh, he's now with the Punjab police. So good to see you, sir. And also, finally, it is a great privilege to welcome from Meghalaya today the parents of Captain Clifford Nongrum, Keishing, Peter and Sally, parents who have had to deal with the heartbreak of losing their son. In fact, Peter made a personal pilgrimage to the exact point where he lost his son. And my heart goes out to both of you as parents. You are no less heroes than the men who actually went into the battlefield. So actually, Major Akhil, let's start by looking at each of these stories one by one. And let me start with the story of Satpal Singh, sir, who's here with us. He's the tiger of Tiger Hill. He was an officer with SIKH, which played such a critical role. And he eliminated one of the most sort of dreaded soldiers of the Pakistan army. And I want to start, before I come to Satpal Singh, sir, by asking you, Akhil, sir, to tell us a short story, a brief introduction to Satpal Singh, sir. Sir, you're muted at your end, sir. Please don't mute yourself, sir. No, I did not. Okay, fair enough. We'll start. Yes, sir. Yeah. Okay. So greetings on the Vijay of Operation Vijay. Firstly, I'll just give a brief intro about Operation Vijay. I can summarize Operation Vijay in two lines for our viewers.
कि जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, पर जो सांस पे गुजरी है वो किस दिल को पता है. So we all know about the bravery and the courage of the sacrifices of our soldiers, but we hardly know about all the families of all those 1,600 men who were killed in action or wounded from India. जो चले जाते हैं उनकी लाइफ रादर आसान हो जाती है, और जो रह जाते हैं उनकी लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट होती है. So that is the crux of the Kargil बिल्कुल war. बिल्कुल Uh, the official date of the Kargil war, again, I'll just clear some doubts, a lot of doubts which are all around the world. First of all, the official date of the Kargil war is 24th of May 1999 till today, 26th of July 1999. Operation Vijay was declared on 24th of May. Not 1999. You said 1989. of course, 1999. 1999. Yes. Yeah. So that is one. Secondly, the operation started with Pakistan declaring the operation as Operation Koh Paima. Now, Koh Paima is basically meaning Parvatarohi, जो पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, mountaineers. जी. And they named it because this preparation had been done elaborately for at least for 2 years. Otherwise, it was not possible to scale those heights. And then, in the initial success in the month of May 1999, when they got success against India, they changed the name of the operation to Operation Badr. Now, Badr means Pura Chand. तो उनको पूरा चांद चाहिए था. And of course, the reasons were political as well as military, and there are many reasons behind this. But the man behind this was, of course, General Parvez Musharraf. Now, coming to the Kargil war per se, in terms of the data again, if we talk of data, the correct data, official records, there were 481 soldiers killed in action and 1,159 injured in the Kargil war, which makes it a rough figure of around 1,600. That is one. Secondly, out of this 481 killed in action, there were 25 officers, 17 JCOs, and 439 Jawans. And out of 1,159 injured, there were 67 officers, 75 JCOs, and 1,017 Jawans of the Indian Army. That is the breakup official record of the Kargil war from Indian perspective. Now, coming back, of course, on our first hero as we start off is then Sepoy, now Assistant Sub Inspector of Punjab Police, Satpal Singh, Veer Chakra, 8th SIKH. And he was one of those forgotten or unsung heroes of the Kargil war till 2019, when he was noted by the then CM of Punjab, Captain Amrinder Singh, and was made Assistant Sub Inspector because the job he was doing in his capacity in Punjab Police was not commensurate to his gallantry and bravery and his honor which has been granted to him from the Indian Army. Now, Satpal, if I summarize the story of Satpal, he was the hero of Tiger Hill. And his story is an awe-inspiring story of a spirited, robust, tenacious soldier who served his motherland in uniform for generations, including his father and his brother, both as a soldier and a police officer, by rising from a small village to become a national hero. Again, for the records, he is the only living legend from his state and of his battalion to be honored by the 3rd highest gallantry award of India for his fierce soldiering, fighting spirit, extreme bravery, and motivating his fellow soldiers despite being grievously wounded during the Kargil War of 1999. So, on this note, सतपाल, मैं हिंदी में बात करूंगा, पंजाबी मैंने आंदी नहीं ज्यादा, तो आप ऑपरेशन विजय की इस विजय पे आपका स्वागत है, और गर्व की बात है हम लोग के लिए कि आप हमारे सामने हैं, क्योंकि आप हीरो के मुंह से खुद से सुनना
कि भाई मैंने कैप्टन करनाल शेर खान को दफनाया था, अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व गर्व है। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप अपनी कहानी जरा हमें बताएं। जी थैंक यू सर। सर मेरी बटालियन 8 सिख टाइगर हिल का टास्क था हमारी बटालियन का। तो मेरी घातक प्लटून कमांडो प्लटून में मैं इन्वॉल्व था। 3 जुलाई को हमारी टीम, जिसमें मैं था 2 अफसर, मेजर रविंद्र परमार, RK शरावत और 4 JCO 46 ओवर मूव की इंडिया गेट की तरफ, जिधर से उनका राशन वगैरह ये वो या कम्युनिकेशन की तार वगैरह लगी हुई थी उसको कट करने के फिर हमने टाइगर हिल पर धावा बोलना था। ऐसे 3 को हमने रात को मूव किया, 4 की दिन को स्टॉप, क्योंकि मूवमेंट कर नहीं सकते थे, ऊपर से टाइगर हिल से फायरिंग वगैरह काफ़ी आती थी। 4 को रात को फिर मूव किया हमने, 4 को मूव किया और जैसे ही सुबह फर्स्ट लाइट 4 बजे हमने अटैक करके इंडिया गेट के ऊपर जो 5-6 आदमी थे मार लिए और बाकी कुछ भाग गए। उसी टाइम हमने उनका लिंक वगैरह कटअप करके पूरा, जैसे ही हमने लिंक वगैरह कटअप कर दिया तो टाइगर हिल के ऊपर पूरी हाहाकार मच गई। पीछे उन्होंने अपना मैसेज छोड़ दिया, या तो हम टाइगर हिल छोड़ रहे हैं, नहीं तो हमें काउंटर अटैक भेजो। 5 तारीख को हम पूरा बैठे रहे क्योंकि मूवमेंट नहीं कर सकते, फायरिंग आता था। 5 तारीख को रात को हमने थोड़ा बहुत डिफेंस पत्थर वगैरह इकट्ठे करके अपना अपना छिपाव के लिए किया। पता हमको भी था कि काउंटर अटैक दुश्मन का आएगा ही आएगा। वही बात हुई, सुबह 4 बजे के करीब दुश्मन का काउंटर अटैक आया और नफरी उनकी, हम तो टोटल 52 थे, 2 अफसर 4 JCO 46 ओवर, और उनके तकरीबन ऐसे लगा लो कि आगे वाले लोग सैनिक उनके दिखाई दे रहे हैं, पीछे तक की लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही थी। कितने लोग थे सतपाल जी? कितने लोग थे? मैम 700-800 के करीब होंगे। तो आप थे 52 और वो थे 700-800? 700-800। उससे पहले जब हमने देख लिया, हमारे सूबेदार एक निर्मल सिंह थे जो पुराने सूबेदार थे, उन्होंने हमको थोड़ा मोटिवेट, नए लड़के भी थे जो ट्रेनिंग करके जस्ट मतलब के बटालियन में आते हैं, तो उनको गाइड किया। हमारे गुरु गोबिंद सिंह ने पूरा परिवार वार दिया, बाबा दीप सिंह सिर अपना हथेली पे लेके लड़े, ऐसे डरना नहीं, अपनी देश की इज्जत का, अपनी सिख कौम की इज्जत का सवाल है। और उन्होंने जकारा बुलाया, जैसे नज़दीक आए उन्होंने अपना जय अकबर अली बोलना शुरू किया, हमारे ऊपर अटैक किया। और हमारे जैसे ही निर्मल साहब ने और हमारी पार्टी ने बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, ऐसे गूंजी पहाड़ों में आवाज। वो 700-800 को ऐसे लगा पता नहीं कितने सिख हैं, कितने सिख हैं। वो तो ऐसे ही घबरा गए। जो उन्होंने आते आते फायर किया, मतलब हम नज़दीक पहुंचने, हमारे पास पहुंचने से पहले जो उन्होंने RPG का फायर करके जो हमारी कैजुअलिटी वगैरह कर ली थोड़ी बहुत। एक JCO करनैल सिंह साहब थे, उनके साथ वो गन मैं देख रहा हूँ साफ, डेड बॉडी को भी उन्होंने ना काट रहे हैं बेल्चे के साथ, बेंट के साथ, इतना मतलब कि वो मतलब आपसे यहाँ पर एक बेदर्द सवाल, होते। जी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा यहाँ। जी सर। See, Barkha, that the Tiger Hill complex, you have seen that. So it's a huge complex, and what he's I mean, talking about. not just have I seen it. I was right there in a bunker Yeah, exactly. when it was reclaimed, reporting on. Yeah, It was a turning point. It was a turning point in the war. Go ahead, go ahead, Akshay. And I was watching you on television. I was in college at that time, and I was watching you on television. The brave lady, she is there braving this. And the first reporting, I that vividly remember this RT shelling. The RT was fired, and then you were right there, and you were shaken up, and then you started your reporting. I jumped. Yeah. When I'd never heard the sound of a Bofors gun. तो जब मैंने पहली बारी Bofors gun का sound सुना, मैं ऐसी कूदी. Right. But go ahead, sir, with the question for Satpal sir. Yeah. And of course, and I was wondering, मैंने कहा कि इनको जर्नलिज्म छोड़ना पड़ेगा because इनके कान में प्रॉब्लम होने वाली है. So that complex is a huge complex, Tiger Hill. और ये जो 800 लोगों की बात कर रहे हैं सतपाल,
ये उसी की बात कर रहे हैं कि टोटल नफरी कितनी थी जहां से फायरिंग, इफेक्टिव फायरिंग आ रही थी इंडियन ट्रूप्स के ऊपर. So it is not about that area where he was. It is about the effective firing which was coming on that area from different directions of the entire feature. One is that. Secondly, सतपाल, मैंने आपको यूं इंटरप्ट किया कि आपने जब कहा कि भाई 8 सिख के जो हमारे बैटल कैजुअलिटी हुए थे जवान जेसीओस, जी सर, उनके मृत शरीर के ऊपर जी सर, दुश्मन जो है उसके बावजूद गोली मारे जा रहा था और पैरों से उनको, तो गोली तब आप नहीं, गोली नहीं सर, बेलचे से काट रहे हैं, AK-47 का बेंट मार रहे हैं, गन को कंडम कर रहे हैं, गन में ब्रेस्ट मार रहे हैं, और हैंडसेट काट रहे हैं, सेट की हैंडसेट काट रहे हैं, वायरलेस की जो PRC सेट होती है पीछे लगाते हैं बड़े वाली, उसकी हैंडसेट होती है, वो काट के फेंक रहे हैं. पूरा मैंने सीन देख रहा हूँ. फिर मैंने बोला था, है ना? हाँ, मैं सोच रहा हूँ यार, क्या कैसे लोग हैं ये, जो एक डेथ ही होगी आदमी की, उसको अभी क्या करेंगे ये मार के, कैसा इनका. सतपाल जी, आपकी ये कहानी शॉकिंग है कि जो इंडियन सोल्जर्स की बॉडीज थी वहां पे उनको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था. मैं यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट करना चाहती हूँ कि हमारी जो फौज है, उन्होंने, पाकिस्तान ने तो अपने सोल्जर्स की बॉडीज को क्लेम भी नहीं किया और उनको छोड़ दिया, और हमारी फौज ने वो लास्ट राइट्स परफॉर्म की. सो दैट इज द कल्चर ऑफ द इंडियन आर्मी. सर सतपाल जी, आपने भी ये देखा होगा. आप कुछ बोलना चाहेंगे? देन आई वांट टू इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट फैमिली. जी मैम, हमने उनकी बॉडी में दफनाई है, मिट्टी में खोद के. मुस्लिम है, जैसे उनका रीति रिवाज है, जलाई नहीं, मिट्टी में खोद के उनके रीति रिवाज से उनको दफन किया है, खा के सुपुर्द किया है उनको. हमने पूरा रीति रिवाज से किया है. और पीछे से हुक्म ऐसा मिला था, जो अफसर की डेड बॉडी है, मेजर इकबाल और कैप्टन कर्नल शेर खान, इनकी बॉडी पीछे भेजनी है, आएगी पीछे. पहले तो सोचा भी ऐसे बोरी में डाल के घड़ीस के ले आएंगे, खींच के ले आएंगे. और ये भी मैसेज मिला, खरोच भी नहीं लगनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए बिल्कुल, बोरी में डाल के. और दूसरी तरफ हमारे जो लोग थे, उनकी बॉडीज के साथ भी बुरा बर्ताव हो रहा था. बुरा बर्ताव किया. आपको मालूम है, फोर हमारे भी, मैंने देखा कर्नल साहब की बॉडी के साथ ऐसे हुआ. और जो फोर यार्ड के सौरभ कालिया की टीम थी, उनके साथ क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड को मालूम है. जी, Akhil, just one second. I think let's do one thing. Let's introduce all of the families once, and then we can get deeper into some of the issues. That's a good idea. So I want to welcome to the program now. We have Peter and Sally with us, and they are the parents, the proud parents of a very young captain, Captain Clifford. He was known as Cliffy. His friends called him Cliffy. And in fact, if I'm not wrong, Arjun's father and Cliffy were the same batch. Akhil, do I have this right? Major Akhil? Do I have this right? Yeah, okay. Absolutely correct. Absolutely. Both of them. In fact, they were four, batchmates. Captain Amit Bhardwaj, who sacrificed himself on 17th of May 1999 from Jaipur. Captain Keishing Clifford Nongrum from Meghalaya, of course. Third is Captain R. Jerry Premraj, Veer Chakra posthumous, again from Kerala. And Lieutenant Colonel Rajesh Vinod Kulkarni. There were four course mates, and only one remained alive after that war. These are the stories, which touch the heart, because when Lieutenant Kulkarni on the war field, when he came to know that he has lost all three of his course mates, and they were the best of friends. So he's a very strong man otherwise, but then he actually broke down. And when a soldier breaks down, there cannot be a more distressing sight than a soldier breaking down. I want you to tell us, before we speak to Peter and Sally, the story of Captain Cliffy. Yeah. So, Captain Keishing Clifford Nongrum. So he was tasked, basically I'll straight away go to the war action, which he did. So he was tasked to assault a feature at point 4812 in the Batalik sector. Now, there is a very interesting thing about Batalik, which I would like to mention here. Batalik was not covered by the camera in the war. Because you couldn't reach it. Yeah, of course, absolutely. So the press was not allowed to move into Batalik because of the threat perception over there and the kind of features. Batalik is a very tough area.
And I was in Ladakh last month. I visited each and every area of the war theatre, including Batalik. And the first where I went was exactly where Captain Keishing, Clifford, Nongrum had fallen in his war. Now, Batalik, out of the total casualties of 1,600 casualties and injured, 150 were killed in Batalik and 232 were wounded there, which clearly shows, and this is the highest number of casualties and injuries occurring at the same time at one particular time of a war theatre. So Batalik was the toughest of this region where Captain Keishing Clifford Nongrum went for his war. Young man, 5th September 1997 commissioned, and the last batch to be commissioned in the rank of second lieutenant in the Indian Army. After that, the second lieutenant was abolished and lieutenant came in. Actually, the words will fall short if I try to explain the bravery of that young man. Coming from a background of Meghalaya, and by the way, let me tell you, not many people know that Peter Uncle is a Naga and Saili Auntie is from Meghalaya, right? And he had a deadly combination of the DNA of his parents, and Nagas are natural warriors. They need not, they don't require actually a training to go and their fight. And this young man, the tragedy of 12 Jeklai was that they were de-inducted from Siachen Glacier after their posting there. They were moving to Delhi. The advance party had already gone to Delhi for the peace posting. When the commanding officer received a message, a warning order that to report from Tharu to Batalik. And he had only 250 men with him, including officers and JCOs and Jawans. And he said that I don't have a strength. Half of my Paltan has gone to Delhi, but they were called back. So the entire unit was called back for this particular attack, where most of them are tired, shortage of weapons, ammunition, supplies, and they are coming from the toughest battlefield in the world, which is Siachen Glacier, and going to the capital of the country, the nation, with the hope of chutti milegi, shadi hogi. Captain Amol Kalia was a colleague of Captain Nongrum, and he was about to get married then. And with this hope, now they go back to the war. Now just imagine their mental state. And they go back to the war, and they bring back one of the toughest victory. The commanding officer of 12 Jeklai, who unfortunately could not be a part of this program, he was the only CEO of that war, Barkha, where he was pipped to the rank of full colonel by the chief of army staff because of the great action of 12 Jeklai, And the 12 Jeklai troops, as you know, they are 50% Muslims from Jammu and Kashmir, and 50% are the rest of the religion. Now the combination of India comes into picture. 12 Jeklai is a perfect example of India. Muslims, Hindus, the company commander is a Punjabi, another company commander is Naga and from Meghalaya, and the CEO is a Jat from Rajasthan. That is India coming to play against Pakistan. And Parveena's father was a part of, also from 12 Jeklai, but he was not a part of the captain. I will come to Parveena's father in a moment. Let's tell, I want to start speaking with Peter and Saili. So if you can briefly tell us Clifford's story. So Captain Nongrum displayed conspicuous courage and devotion to duty and inspiring leadership in leading the column to achieve the ultimate success, for which he was awarded the Mahavir Chakra posthumously. And this young man finally fell to bullets on the fateful day of 1st of July in the morning, 4 o'clock. And that was, at that time, it was raining in Shillong. Probably the skies were crying. And there's no word to describe the bravery of this young man. I want to say that the families of our soldiers are as heroic. In some ways, maybe, Akhil sir, more heroic, because they have to live for years after the war is over with the loss. Since you have called him Peter Uncle, I'm also going to call him Peter Uncle. So Peter Uncle and Saili Auntie, I want to ask you, your proud parents, you used to work in State Bank of India, Peter sir. When you think of your son today, how do you remember him? What is your abiding memory of him? And what would you like to say to the people of India today about your son? Peter sir, I'll start with you, or Saili ma'am, whichever one of you wants to speak. Please go ahead.
Yeah, Ma'am Barkha, thank you for questioning us. Uh, Many things are there to remember about Clifford. Clifford was a very brave boy. He during his childhood also he was a brave boy, and he want to know things what is inside that even in the say sport, I mean uh, toys also he would like to break it, and he would like to see and light it, and he want to experiment many things, and like that he was very, very brave and also very uh, intelligent boy, so to say, and he was very helpful to family members also, and especially to his mother. He helped in the work, and also in our family work. Also, he used to join while constructing house and all. Yes, sir. He joined us, and he was very uh, honest boy also, and all these things I remember about him. Peter, sir, you went to the spot. You went to Kargil. It was a pilgrimage for you. You went to where your son lay down his life for India. Can you talk about what made you do that? Uh, I have gone there, of course, to Yes. see, and we. I have gone there for to pray for his soul to rest in peace. And there, according to Hindu, my religion also I have done, and also Hinduism also some sepoys who accompanied us, they have done in that way. It was done properly, and Amazing, sir. Amazing. My hearts go out to you. Akhil, sir, if you'd like to ask a question to the parents of Captain Clifford, Saili hasn't spoken. Do go ahead before we introduce the family of Colonel Kulkarni. Go ahead, sir. Akhil, sir. Auntie, this time we'll trouble you because you don't speak much, at least on camera. And I always remember I have a very close connection with Shillong, and Peter and Cliffy sir comes from Happy Valley, Shillong. Now that Happy Valley cried the day he went away. But Auntie, I want to ask you, in the last 24 years, did this country help you retain the memories of your son? Did we do enough? hmm, Yes, I remember. We remember. In fact, is even though there's so many years back, still we remember him, and also we do not forget even a single moment. Also, Of course. and every occasion like his birthday and his date of birth, we observe it every year, and also silently within our family member itself, with my Yes. two sons and their family. Peter Uncle, We I think what Major Akhil is asking is, you of course can never forget your son, but how do mm, we ensure that these stories remain on forever for rest of India to know? And on this note, Akhil sir, with your permission, before we introduce Parveena, I want to bring in Satpal Singh sir, because you mentioned in his introduction that for a brief while he was mm, actually supervising traffic in Punjab till Yeah, Captain Amrinder Singh saw that yeah, story in Indian Express and then said, "No, भाई ये नहीं हो सकता." सतपाल सिंह yeah. सर, अखिल सर ने एक सवाल रखा कि क्या देश, हमारे जो वीर हैं, हमारे जो ब्रेव हार्ट्स हैं, हमारे जो उनके परिवार हैं, हम कैसे इंश्योर करें कि उनकी यादें हमेशा अलाइव रहे और हम कैसे इंश्योर करें कि जो उनको एक स्टैचर, एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत मिलनी चाहिए वो बनी रहे। आपका अपना एक्सपीरियंस अब तो ठीक ठीक है, लेकिन बीच में आपको भी दर्द हुआ जब आपको एक ट्रैफिक
सुपरविजन की पोस्ट में डाला। आप थोड़ा सा सतपाल जी अगर उसके बारे में अगर आप बात करें, सतपाल जी, कैन वी अनम्यूट सतपाल जी प्लीज? यस सतपाल जी। जी मैम, उस टाइम जब मैं 10 में मैं पुलिस ज्वाइन किया था, वो हमारा जो एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है उसमें ज्वाइन किया था। कोई गैलेंट्री वार्ड या कोई ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी। ये तो 2019 में जब सरकार मनाती है ये सिल्वर जुबली वगैरह, 20 साल हो गए थे, तो इन्होंने प्रोग्राम किया। तब मीडिया ने इंटरव्यू जब ली मेरी, वो इंटरव्यू 6 जुलाई को काउंटर अटैक वाला हमारा हुआ था टाइगर हिल का। 6 जुलाई 19 को सुबह 6 बजे चला दिया इंडियन एक्सप्रेस न्यूज। वो सीएम साहब ने देखा, तो सीएम साहब ने बोला ये सतपाल सिंह वीर चक्र आके कांस्टेबल भर्ती किया, इनको बुलाओ दोबारा, रैंकड दिया जाएगा इनको। तो फिर दोबारा मेरे को ज्वाइनिंग कराया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर भी चलो याद किया सरकार, मतलब अखिल सर कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? अखिल सर? Yeah, this was an excellent gesture, you know, which showed the empathy of the ruling brass, you know, of the rulers towards the soldiers of this country, and none better than Captain Amrinder Singh could have done this, because But it of is course not it should never have happened to begin with, no, Akhil sir? Sorry? It should never have happened to It begin should have with. never happened, no doubt about that. See, basically, at that point of time, as I know, Satpal, आपने जब ये ड्यूटी जो आपकी कांस्टेबल की थी, जब आपने इसको एक सर्विसमैन कोटा में जब इसका चुनाव किया कि चलो मैं भर्ती हो जाता हूँ पंजाब पुलिस में, तो आपने क्या आपकी ये मजबूरी थी या आपने ये सोचा कि चलो पुलिस में मैं चले जाता हूँ, कोटा है और मुझे काम करना ही है, तो मैं कोई भी पोस्ट मिले मैं चला जाऊंगा? क्योंकि आप हवलदार रिटायर हुए थे फौज से। जी सर। और हवलदार और कांस्टेबल बराबर होते हैं, हेड कांस्टेबल और हवलदार पुलिस के, लेकिन आप कांस्टेबल बन के गए थे, तो एक्चुअली तो आपने क्या आप क्यों गए थे उसमें? सर देखो, इंडियन आर्मी में 17.5-18 से ज्वाइनिंग कर लेते हैं आर्मी में। 18 साल में मैंने ज्वाइनिंग किया था। 18 करके मान लो मैं 35-36 साल एज थी, तो कितनी एज, मतलब कि 35-36 साल एज, अभी बहुत एज बाकी होती है। तो मैंने सोचा भी अभी सेंटर की तो कर ली, अभी स्टेट की भी जॉब करनी चाहिए। तो उसमें मैट में भी बढ़िया एक्स सर्विसमैन का कोटा 13% होता है हमारा सर, बढ़िया मतलब कि रिस्पेक्ट मिली कारगिल की वजह से। जी सर। आपने उस कि जो आपको तबका मिलेगा वहां पर, वो तबका फौज के तबके से कम होगा? हाँ सर, ये तो चलो फिर भी थोड़ा हो जाता है, बच्चों के पास रहना, ये आर्मी में दूर रहते हैं घर से। हाँ जी सर, थोड़ा मैं तो ये कहूंगी कि हमें कुछ बंदोबस्त करना चाहिए अखिल सर, that your Gallantry Award winners should not have to be traffic constables. मुझे ये ठीक बात नहीं लगती है, और सतपाल सिंह के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। We have to find a better way. And सतपाल जी, हाँ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं परवीन जी मैम, मैंने मेजर साहब से भी बात की थी, पहले भी हमारी डिस्कस हो चुकी है। जैसे एक पॉलिसी बनाई हुई है सरकार ने, ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड। जो अवार्ड विनर है गैलेंट्री अवार्ड, अगर वो तो पोस्टमार्टम है, शहीद हैं, तो उनके बच्चों को गेस्टेड अफसर की पोस्ट मिलेगी, भर्ती किया जाएगा। अगर वो जिंदा तो नहीं होगा। ये देख लो सरकार की पॉलिसी कैसी है। अगर वो जिंदा है, काम उसने भी वही किया है, लेकिन जिंदा क्यों है, इसलिए नहीं होगा। नहीं सर, ये तो कभी नहीं होना चाहिए। ये तो पूरे देश ने तो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी पढ़ी तो बहुत गुस्सा आया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी गुस्सा आया, उस समय चीफ मिनिस्टर थे। सतपाल जी, विद योर परमिशन आई विल मूव ऑन टू परवीना नाउ एंड अर्जुन। Major Akhil, I'll request you to introduce the story of Lance Naik Ghulam Mohammad Khan, Parveena's father. Yeah, okay. Lance Naik Ghulam Mohammad Khan Veer Chakra posthumous 12 Jack Light, Jammu and Kashmir Light Infantry. It's again an uplifting story of triumph over adversity amidst a tragic tale of a young gun from an unprivileged background who ends up as a national hero. And the only soldier from the other ranks of Jawans of Jammu and Kashmir Light Infantry Regiment to be posthumously honored by the third highest wartime gallantry award of India for his extraordinary valor and supreme sacrifice during the Kargil War.
You know, Ghulam comes from a family where his father, मैंने कहानी में बोला है इनके ऑडिबल में, इनके फादर जो थे खान, he was again a very self respecting and a proud Muslim from Jammu and Kashmir. और उन्होंने एक टाइम के ऊपर आतंकवादियों को राशन देने से मना कर दिया था और आतंकवादी उनको गोली मारने वाले थे। जब उनको रियलाइज हुआ कि मेरा जो होगा सो होगा, पर मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूं, तो वो अपने बच्चे को, गुलाम को लेकर जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर चले गए श्रीनगर में, जहां वो खानसामे का काम करते थे। ही वाज अ कुक। और वहां पर इनफॉर्मली गुलाम ने जवानों के बीच में ट्रेनिंग जो देखी और हासिल की, उससे वो जज्बा आ गया और ही वेंट टू द आर्मी। वैसे मैं आपको बता देना चाहूं कि पूरे खानदान में सारे फौजी हैं, अलग अलग पलटनों में, अलग अलग रेजिमेंट्स में फौजी भरे पड़े हैं। एंड बल्कि मुझे मैं नाम नहीं लूंगा, इनके परिवार के एक सदस्य को वो आना चाहता था, बिकॉज परवीना की जगह, कि परवीना कश्मीर में है, मैं आ जाता हूं। मुझे उसको रोकना पड़ा कि यार तुम सर्विंग सोल्जर हो, तुम नहीं आ सकते। और बोले कि सर मुझे बड़ा गर्व है अपने भाई के ऊपर, और मैं भी उसी गर्व को पूरा करने के लिए फौज में हूं, और मैं आके दिखाना चाहता हूं कि हम भारतीय हैं, हम कश्मीरी बाद में हैं, पहले भारतीय हैं। उस स्पिरिट को मुझे कर्व करना पड़ा कि तुम नहीं आ सकते, तुम सर्विंग हो। तो परवीना उनकी जगह आई हैं। एंड आई एम रियली वेरी आई एम टच्ड बाय द जेस्चर ऑफ परवीना, कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर हमारे कहने हमारे रिक्वेस्ट पे फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के यहाँ पर आई हैं। एंड शी इज अ स्टूडेंट। बट अगेन बिफोर शी बिगिंस हर स्टोरी, बिकॉज लेट मी टेल यू समथिंग वेरी टची ओवर हियर। परवीना अपनी माँ के पेट में थी जब इनके अब्बू का देहांत हुआ था। इनके अब्बू का देहांत हुआ था 8 जून 1999 को, कैप्टन अमोल कालिया के साथ। और परवीना पैदा हुई थी सितंबर 99 में। तो इन्होंने अपने अब्बू को कभी देखा नहीं, उनकी सिर्फ कहानियां सुनी है। और आज बदकिस्मती से इनकी अम्मी जो हैं जरीन अख्तर, जो लांस नायक गुलाम मोहम्मद खान की वीर नारी हैं, भारतीय अगर सेना की भाषा में बोलूं वाइफ है, उन्हें कैंसर है और वो उस कैंसर से जूझ रही हैं। भारतीय सेना उनकी पूरी हेल्प कर रही है और इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। और परवीना से अब बात करते हैं। और परवीना 24 साल में, इन 24 सालों में तुम एक्चुअली उस युद्ध की पैदाइश हो, एक तरह से कह सकते हैं। तो अंदर से जो होता है ना, वो युद्ध आदमी जब जानता है कि मैंने पेट में, जैसे वो अभिमन्यु ने अपनी माँ सुभद्रा के पेट में वो युद्ध के बारे में सुना था अपने पिता अर्जुन से, वैसे ही तुमने भी वो किया है। तुम बेटा बताओ कि अपने अब्बू के बारे में जो मन में आया वो हमें बताओ। सिर्फ उनकी बहादुरी की बात नहीं करनी है, बहादुर तो वो थे ही, लेकिन अपने अब्बू के बारे में बताओ एक बेटी के तौर पे। सर जब मैं पैदा हुई तो उसके पापा पहले ही शहीद हो गए थे, उसके बाद मैं पैदा हुई थी। तो 5 साल तक मम्मा ने हमें फील ही नहीं करने दिया पापा नहीं है। तो जब 5 साल के बाद स्कूल गए हम, तो वहां पर सब बच्चे बोलने लगे कि हमें पापा लेने आ रहे हैं। उसके बाद मैं घर आई तो मैंने मम्मा से पूछा हमारे पापा कहाँ हैं। तो मम्मा ने बोला कहीं नहीं, वो ड्यूटी पर है, वो आ जाएंगे। तो उसके बाद जब फैमिली में बड़ी होने लगी तो फैमिली में बातें, रिलेटिव्स बातें करने लगे पापा के बारे में। तो उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा फक्र भी हुआ, क्योंकि पापा की बहादुरी के बारे में जब मैंने सुना तो उस टाइम बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ मुझे। तो लेकिन पापा की याद तो हर टाइम आती है। तो जब उनके बारे में सुनते हैं, वो इतने बहादुर थे, वो हीरो थे, तो उस टाइम प्राउड फील होता है। परवीना, आपने तो सबको रुला दिया आज, लेकिन हम आपका दर्द समझ भी नहीं सकते। यूर अ कारगिल बेबी, जैसे कहते हैं ना कि युद्ध की बेटी। मेजर अखिल भी रो रहे हैं, मैं भी रो रही हूँ, सब रो रहे हैं। पर आप पे जो बीती, टू नॉट नो योर फादर, टू ग्रो अप विदाउट अ फादर, एंड टू नॉट नो हिम मस्ट बी, मतलब वो थोड़ा और भी मुश्किल लगता हो।
आपको लगता है कभी कि भाई मैं अपने फादर को मैं अपने अब्बू को जान ही नहीं पाई? मैम जब भी कोई फंक्शन होता है घर पे, कुछ भी होता है, जब स्कूल में पेरेंट्स आते हैं उस टाइम बहुत ज्यादा फील होता है, लेकिन जब पापा की बहादुरी के बारे में सुनते हैं उस टाइम बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। सुपर हीरो थे वो। Major Akhil, this is in tears the human cost of soldiering. Exactly. This is what I bring out in the stories, Barkha. गुलाम के बारे में मैं बहुत पहले स्टोरी करना चाहता था, लेकिन चूंकि 12 जुलाई पे मैंने कैप्टन नोंगरुम और कैप्टन कालिया को कवर कर लिया था, तो गुलाम था मेरी नजरों में हमेशा से। परवीना बेटा, तुमको भारत की तरफ से पास पड़ोसी, फौज, रिश्तेदार, जो भी बोलो, उन्होंने कभी एहसास दिलाया कि तुम अनाथ हो, या उन्होंने तुम्हारा पूरा सपोर्ट किया 24 सालों में? एक मॉरल सपोर्ट एक चीज होती बोलिए परवीना, आप बताइए। जो मेजर अखिल पूछ Yes, रहे हैं कि एक तरह से फौज ही आपकी परिवार बन गई। yes मैम। बताइए। फौज का हमें पूरा सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी ऐसा फील ही नहीं करने दिया। फौज हमेशा हमारी मदद ही करती है। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए। आप नर्स बनने की प्रोग्राम में हैं, और आपने नर्स बनने का फैसला कैसे किया? मैम नर्स मम्मा ने किया चूज। अच्छा, तो आप खुश हैं इस चॉइस से कि नहीं परवीना जी? यस मैम, मम्मा की चॉइस तो मेरी से। चलिए, इंशाल्लाह आप बहुत बढ़िया नर्स बनेंगी। मेजर अखिल, वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस आवर लास्ट sort of Gallantry Award winner. Our focus on the heroes of Kargil. We have here Arjun Kulkarni. His father is a hero of Kargil. Please go ahead, Major Akhil. Yeah. All right. So Lieutenant, then now Lieutenant Colonel Rajesh Vinod Kulkarni, Sena Medal Gallantry, then with 108 Engineer Regiment, Indian Army. Again, a very twisty tale of a simple, soft-spoken but sharp soldier who stood out as high as the high mountains he vanquished. He is 6 feet 3 inches. It was a tall order for a tall man from a non-military background to battle out a dangerous mission in a race against time, from where he emerged as the only officer of his unit to be honored by a Gallantry Award of India for his sincerity of aim and single-minded devotion. His father, Colonel Kulkarni, is a very interesting man. He'll seldom speak, and he was a philo in the war. The engineer regiment, like typically hoti hai, philo hoti hai, first in, last out. So he got married in the month of March 99. I met him once when I was serving in the army, and that's how I know his story. So, and within 1 month, he went to war, and he had actually taken his wife to his posting in Srinagar. And he just left his wife over there and told ki main abhi aata hu. And he left that place, and he went to his war in May 1999. It was exactly 20th of May when he got the warning order. And that officer and a gentleman came back only in August 2000, after 1 year plus. After the war got over, everything got over. As an engineer, he was first in and last out. Cleared 200 anti-personnel mines, saving hundreds of lives of soldiers. Planting 50 anti-personnel mines, 50 or roughly so and so, in those mountains and again his area of operations was Dras, Barkha, where you were there to cover the entire thing. So right from Toluling to 0.155140, and he was all through that area of attacks of 2 Rajrev, 18 grenadiers. And the interesting thing is, which nobody knows, very few people know, which I covered in my story on Audible, an Amazon podcast, that when he went on Toluling to clear that area with his team, he found the dead body and the mortal remains of Major Rajesh Singh Adhikari over there. Major Rajesh Singh Adhikari's mortal remains were lying there, and the enemy, before leaving that area, had actually planted an IED
and booby trapped the area so that anybody who tries to retrieve the body of Major Rajesh Singh Adhikari gets blown away. So at just imagine that moment when you are sentimental also, seeing your senior officer lying dead over there. You are trying to clear the landmines also over there, anti-personal mines, not landmines, anti-personal mines, snow mines. What enemy had done is that he had actually covered the anti-personal mine with snow so that you don't even get to see what is coming. And the idea was to kill off the troops before they even climb to attack. And then fighting those emotions within in those peak winters of 15,000 feet, minus temperatures, snow. He went there and got that body back by clearing the booby traps and the IDs. So one of the finest soldiers of this war, and his son is actually taken after him in terms of he's absolutely a Xerox, a photostat copy of his father. So actually, I am actually feeling that I'm seeing Rajesh sir over here. I was just thinking, how old are you, Arjun? My age is 21. I was just thinking your father would have been just a few years older than you when the war happened. No, Major Akhil? Like, He was 26-year-old when he went to war. yes, yes. Major Akhil, go ahead with your first question to Arjun, sir. Yeah. So Arjun, you were born in 2002, if I'm not wrong, right? Yes. 3 years after the war. So you grew up on the stories of war. I'll ask you a straight question, as straight as it comes. Why don't you join the army? Now you have to think over this. From my childhood, like you said, that I have been listening to stories about the war and about the stories of my father's colleagues who were in the war, and also other operations that he was a part of. So, yeah, definitely, I will say that I have been influenced quite heavily by it. And there has always been some part inside me that wanted to join the army. But I feel that uh, I just don't. I like it is my personal opinion that I don't have the kind of mentality that it takes for those hardships, and also I may not be medically fit to join the army. That is another reason. Yes, that's very honest, But Arjun. That's very honest. This I think. generation is much honest than our generation. Yes, yes. Arjun, I want to ask you before we start taking last comments to tell us a little bit about your dad. Like, what does it feel for a family, a family of a soldier? Because you know that it's not it's a great life, it's a very honorable life, but it's not always a safe life, right? So, what do families go through? What did your mother go through? I mean, have you ever spoken to her about that? so, like Major Akhil said, that when my father was posted during the war, he was recently married, and at that time my mother also went with him to Srinagar, and she tells us stories about what she did during those months. So I'll just share that. So uh, I think the war started in May of 1999, and from then my mother was alone, sitting in a room for almost 2 to 3 months till the things calmed down. And she used to tell us that she had a very tough time because she is not from a defense background at all. And every day when you are sitting in such a hostile place where there are daily casualty newses and war news, and at that time Srinagar was also under attack, so frequent blackouts and very heavy restrictions on traveling, etc. So it was all a very tough life. Also, at that time there were no communication methods. So for her to communicate with her friends and family back at home, so she had to make friends amongst the other uh, army wives or people that were living around her at the time. So it was a tough time. I would like to say that
the hardships that that an army family goes through definitely cannot be sidelined. As a family of, I have always found that we stay together in the thick and thin of life. It is something I noticed, and I cherish that a lot. Absolutely. And whenever I tell my friends about my father, his bravery in naturally it just swells with pride, and I feel very proud. You should be very proud. We're at the end of this program, Major Akhil. I'm going to request you, before we take last comments from all of our guests, one message that they'd like to leave the audience with, to very briefly tell us about somebody who's going to join our program today, but because of the turmoil in Manipur, could not. And I think it's very important that his story goes out to the larger audience. So, briefly, sir, and then we will take last messages from our four very special guests here today. Yes, Sipai Kapani Ashuli, Veer Chakra posthumous, one Naga from Manipur. This Jawan of army. He is originally a Naga, but from Manipur. A tremendous story of a terrific tribesman from the far-off lands of India, ever smiling and grounded and humble and fiercely loyal soldier from the family of church pastors who went on to become the only soldier from his unit and state to be posthumously honored by the third highest wartime gallantry award of India for his nerves of steel and fearless in the face of enemy and camaraderie of the highest order. Now, Barkha, I want to mention over here, India considers the Chakra series, the Paramveer Chakra, the Ashok Chakra, Mahavir Chakra, Kirti Chakra, Veer Chakra and Shaurya Chakra only to be the gallantry awards, which is not. There is Sena Medal Gallantry, Vayu Sena Medal Gallantry, and now Sena Medal Gallantry, which are also gallantry awards. And there were a total of 300 gallantry awards given out during this particular Operation Vijay, which you called Kargil War again, out of which 190 were Sena Medal Gallantry, of which Lieutenant Colonel Rajesh Vinod Kulkarni is one of them. So the government, it is not in public knowledge. Why? Because it has not been projected as the gallantry award. It is missing from websites of government, missing from the official websites. And I am after this for last 2 years to ensure. And thankfully today what has happened, we have got information that today when the Chief of Army Staff and the Defense Minister was there, all the Sena Medal gallantries have been projected by the Indian Army in their Kargil Vijay Divas. Great. Fantastic to know that. Fantastic to know that. Finally, the acknowledgement is coming. And this Manipur, Ashuli, again, why I'm mentioning about him is that apart from him and Captain Sumit Roy, there was another officer, Captain Sumit Roy, Veer Chakra, posthumous, 18 Garhwal rifles. They were actually killed, after the war got over. They were not killed, and their objective, they achieved their objective and came back. From my side, if you look at this, I consider the battle casualties which has happened in this war is again a matter of luck. Luck has got a lot to do with this, because luck played a very pivotal part in this. And I consider those soldiers very lucky who came back from the battle. This was an impossible war. The Kargil War was an impossible war, right? Satpal knows that very well, and I was about to ask him, but because of the paucity of time, he could not. If you ask Satpal कि गोली जब लगती है तो कैसा लगता है, no better man to describe that. In fact, why don't we start there? We have about 3 to 4 minutes left. So let's start, Satpal ji. ये जो सवाल मेजर अखिल ने किया, लोगों को समझ नहीं आता. लोग अपने कंप्यूटर पे बैठ के सलाम कर देते हैं एक सोल्जर को, लेकिन गोली जो लगती है, जिसको लगती है, को क्या लगता है? मेजर साहब ने पूछा. सतपाल सर. जी मैम, ऐसे गोली जब लगती है, चाहे दूर से लगे चाहे पास से लगे, तो जख्म एक ही होता है, और दर्द कोई उस टाइम जब लगती है कोई ज्यादा नहीं होती. जैसे नॉर्मल चोट लगी, गिर गए,
की तरह ऐसे ही लगती है। जब वो उसका टाइम मतलब होता जाता है, उसको ज्यादा देर होती जाती है, तो पेन वगैरह, तो जलन सी जैसे उसमें होता है, केमिकल बारूद होता है उसमें, फिर वो जलन वगैरह। वैसे हमारे पास फील्ड पट्टी होती है, हम वो बांध लेते हैं, उससे थोड़ा आराम मिलता है कुछ टाइम के लिए, जब तक फर्स्ट एड अपने पास वो कर लेते हैं पट्टी फील्ड उसमें। आप इतने आराम से ये बता रहे हैं ना, इतनी आराम से, जैसे कि कोई मतलब कोई चीज ही ना हो गोली लगना। तभी तो आप वीर चक्र विनर हैं। और हम हाँ लोग जी मैम। और 4 लगी, जब भी मैंने उनको 4 लोगों को कैप्टन कर्नल शेर खान को मारा, जैसे ही 2 बार आया काउंटर अटैक फेल किया, फर्स्ट टाइम फेल किया, पीछे धकेला, सेकंड टाइम धकेला, और जब तीसरी टाइम फिर आए तो ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने बोला कि जो लीड कर रहा है, जब तक इसको नहीं गिराओगे तो ये आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, इनका मिशन फेल नहीं होगा। तो मैंने सोचा भी अरे कौन लीड कर रहा है, एक ट्रैक सूट में है 6 फुट का, यही हो सकता है इनका ऑफिसर, कोई रैंक वगैरह तो कोई नहीं था, लगा भी नहीं था, कोई नजर भी नहीं आ रहा था। तो मेरे को यही लगा, आगे था, बार बार इकट्ठे करके लेके आ रहा है, तो मैंने फिर इसको ब्रेस्ट मार के गिराया, तो फिर इसके ऊपर टूट पड़ा। इसके साथ है जो दोनों कवरों को, 3 लोग को मारा, 2 इसके साथ एक ऑपरेटर था वायरलेस वाला, उनको मारा। सतपाल, कितनी तो गोलियों के दाग हैं बदन पे तुम्हारे अभी भी? अभी सर 4 गोली का है, घुटने दाग में है? है, पेट में, हाँ पेट में है सर, बाजू में है। और वो दाग कभी जाते नहीं बदन से, नहीं कितना भी? जाते, नहीं जाते नहीं सर। नहीं सर, जाते उसको बोले बैज ऑफ ऑनर सर। मैंने कहा वो इज्जत, वो गोली की दाग इज्जत से पहनते हैं आप, है बिल्कुल ना बिल्कुल। सर? हाँ, इज्जत से मैम, एक्चुअली हाँ, पहनने की जरूरत नहीं है, वो 4 जो लगे दाग हैं उनके बदन में, वही मेडल है उनका, पहनने की सही जरूरत बात है नहीं। सर। और बिल्कुल मेरे पास सर वो यूनिफॉर्म भी है, जिस यूनिफॉर्म में शेख हुए हैं, वो यूनिफॉर्म भी, उसमें खून लगा हुआ है, पहन के वो भी आना संभाल चाहिए, रखा हुआ है वो भी सर, यूनिफॉर्म भी। पहन के अमेजिंग आना सतपाल चाहिए। जी, अमेजिंग। हाँ, उसको खून लगा हुआ है। अखिल सर, लास्ट कमेंट्स फॉर या फ्रॉम द अदर, अब या और मैं जो मेन बात है, देखो जो हमारे ब्रिगेडियर बाजवा साहब को पता है जो लीड कर रहा है, मतलब इनका कितना तगड़ा अफसर होगा, बार बार इकट्ठे करके लेके आ रहा है, उसको मार दिया मैंने बेंट फाइटिंग में। उसी टाइम मेरे 4 गोली लगी, तो ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने उनकी जब डेड बॉडी वापस भेजी है पाकिस्तान लाहौर, उसकी जेब में एक चिट्ठ डाली कि आपका अफसर तगड़ा था, बार बार अटैक लेके आ रहा था। यहाँ मैं ये एक बात वो बोलना चाहूंगा। हाँ, ये यहाँ बहुत जरूरी स्टोरी है। एक मिनट सतपाल जी, और वो बिफोर स्टोरी, एक मिनट सतपाल जी, मैं अपने ऑडियंस को जी बता दूं जी कॉन्टेक्स्ट। हाँ ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि सतपाल सर ने जिस पाकिस्तानी ऑफिसर को जी मैम। एलिमिनेट, हमारी ब्रिगेडियर, ये है इंडियन आर्मी की इथॉस, हमारी ब्रिगेडियर ने उनको रिकमेंडेशन दी कि भाई इनको तो पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने जी मैम। बहादुरी जी मैम। दिखाई। जी मैम। दिस इज द इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी। अब आप बताइए सतपाल सिंह, ये कहा। हाँ, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा जो हमारे ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने चिट डाली उसकी जेब में, भी आपका तगड़ा अफसर था, बढ़िया, ये इसने लड़ाई लड़ी है। उसी चिट की वजह से उसको 2009 में निशाने हैदर हाईएस्ट अवार्ड पाकिस्तान आर्मी का मिला। और ये फर्क अमेजिंग, है पाकिस्तान आर्मी और भारतीय सेना में, यही फर्क है। बिल्कुल। हाँ, अखिल सर, और उसके मदर फादर के इंटरव्यू मैंने भी सुनी है, वो बोल रहे हैं हमारा दुश्मन है, मतलब कि इतना बुजदिल नहीं था, हमारा दुश्मन बहादुर था, जिसने हमारे मतलब कि अपने दुश्मन की तारीफ की है। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि उसने मैंने एक मतलब शहीद कि की, मैंने अखिल एक हाँ अखिल सर, हाँ हाँ, कैप्टन कैप्टन उन्होंने इकबाल, एक कैप्टन इकबाल थे, उनकी माँ का मैंने इंटरव्यू देखा था। उनकी माँ ने ये बात बोला था कि मैं भारत को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की शहादत को उन्होंने बेकार नहीं जाने दिया और उसका बदन मेरे पास वापस आ गया, वरना मैं तो उसका मुंह नहीं देख पाती। और ये बिल्कुल कहने के बिल्कुल। ऊपर पाकिस्तान उनके, आप जानते हो पाकिस्तान उनके कैसे पीछे पड़ा होगा। नहीं, I want to reiterate this, that Pakistan did not take back the bodies of its या soldiers. Pakistan did not acknowledge the role of its soldiers. वो बहुत देर तक कहते रहे ये intruders हैं, तभी वो plain clothes में लड़ रहे थे, तभी वो track pants में लड़ रहे थे। Major Akhil, I'm going to request you to take last comments from all our other 3 guests. We are really now short of time. Go ahead, sir. Peter uncle and Siley auntie, I'll come to you first.
I hope you remember that when I come to pay my tribute to Cliffy sir at his graveyard and the tombstone, I left my beret behind, which is still there for the last 5 years. So that beret was my remembrance. Probably it was a fate that it got left over there, still as a tribute to Cliffy sir. Uh, so uncle uh, and auntie, you are on mute, I think, uncle and auntie. We'll fix Yeah, that. Go ahead. Go ahead. Yeah. yeah, Hmm. fair enough. So, auntie, this time I would like to learn from you, auntie. You tell Maybe. about, about Yeah. the, you Okay, know, yeah. am I audible? Yeah. Yes, Okay. Akhil. Go ahead. So, Yeah. so auntie, you produced a brave son of this soil of India, and you tell about briefly about your son, about his what he has done to the nation. What are your feelings about that? Because a mother can never be happy without her son, come what may. He may have sacrificed for the greatest cause of this country, but without a son, a mother is incomplete. So आंटी आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी जो मन में आए. Now the 24 years gone, but for me it's only like I feel like last year only that Kargil War was done. Then so I will not forget my son forever. And till now also I feel rest my son Shahid still around my heart and still around in my family. So for me, I'll never forget my son. Of course. I will never And forget my son. Yes, ma'am. I'm very proud of him, and I'm very proud because he is Shahid for the country. We are all proud of your son, Yes, auntie. We are all yes. proud of your son. Yes, And absolutely. Absolutely. And as she said, Akhil sir, she said it feels like yesterday. It may be yeah, 24 years, and today the tears will still flow from a mother's heart. And God bless you, Saili ma'am. Go ahead, Akhil. With yeah. last We'll come to Arjun next. Arjun, you were very honest in your views about your father and your connection with the army. Uh, if possible, if it would have been in your hand, would have wanted this war to never take place, or you would have still wanted your father to remain a hero despite the war? Am I too complicated? Should I simplify the question? Yes, please. Even I Do want you, to understand that again. Yes. so do you still want, 24 years down the line after this war, impossible war, avoidable war? Some people, soldiers are not warmongers. Typical true blue soldiers are not warmongers at all. They are the person who wants the peace. Soldiers actually want the peace the most. In your view, would you love to call yourself the son of a war hero, or would you still love to consider yourself कि यार ये वो लड़ाई नहीं होती तो अच्छा होता? Because your mother has got a lot of bitter memories about that war. She was there throughout till August in Srinagar. So you must have seen your mother very closely. Talk about it. Like you said, my mother has very bitter memories of the war. But I also think that my father also has some bitter memories of the war. He lost quite a lot of his friends and batchmates to the war. And I can say that the war, it would be better if the war would not have happened because it was just a temporary war. The after effects of that war still affect the people of that region. And still there is terrorism and a very hostile environment in that region, which even more aggravated by the war. But at that time, we had to do what we had to defend our motherland and
our country. So yeah, it was what had to be done. It was done, but it would have been better if the situation was a bit different. This is exactly what I wanted to hear, Barkha. No, and I think it's very well said, because it is Absolutely those who don't have to pay the price with their blood correct. who can talk very lazily about war. अपनी कुर्सियों में बैठ के जंग के बारे में बात करना बहुत आसान चीज है, उसको Yeah. जीना, उसके आफ्टरमाथ को जीना बहुत मुश्किल चीज है. अखिल सर, लेट्स गिव द Yeah, लास्ट वर्ड परवीना. बरखा, इस चीज पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो बहुत कम लोगों को पता है. ये सच्ची घटना है. अगेन, एक वॉर हीरो को जिसको वीर चक्र मिला था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ही स्टिल सर्विंग, दैट इज व्हाई ही वाज टोल्ड बाय हिज ओन पीपल, whoever, colleagues, relatives or friends or family, कि यार तेरे को गोली लग गई होती और तू घायल हो गया होता या मर गया होता ना, तो ज्यादा बड़ा अवार्ड मिलता तेरे. That is the state of warmongering some people do in this country. And what Arjun said is exactly what I wanted to hear from a young man of today's generation, what he thinks of war. Now coming to Parveena. Parveena, तुम्हारे अब्बू उस पलटन से हैं जिस पलटन ने नमाज अता करके अपना धर्म निभाकर उस मुल्क के मुसलमानों को दफनाया था जब वो खुद मुसलमान थे. तुम उस महान पलटन से तुम्हारे अब्बू आए हैं और उनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास में. बट आज अगर तुम्हारे अब्बू होते तो तुम उन्हें क्या बोलती? सर रिपीट कीजिए, नहीं सुनाई दिया. मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे अब्बू एक उस पलटन से थे जिन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को, उन मुसलमान पाकिस्तानी सैनिकों को उतनी ही रिस्पेक्ट दी जितनी एक प्रोफेशनल सोल्जर को मिलनी चाहिए, और हमें वो नहीं मिली थी. तो आज अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते या कश्मीर को, तुम क्या बोलना चाहती हो? कश्मीर को तुम क्या बोलना चाहती हो? या अपने अब्बू को भी, अगर एक पर्सनल मैसेज, अगर आज आपके अब्बू आपके सामने होते परवीना, तो आप क्या बोलते? मैम अगर पापा हो, मतलब हाँ बोलिए परवीना जी, बोलिए. कुछ भी आपके मन में जो भी है, आखिर में आप क्या बोलना चाहेंगे? बेटा, अगर आंसू आ रहे हैं तो गलत नहीं है. आज के दिन आंसू बनते हैं. I don't know if she can hear us. परवीना जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही. परवीना जी, मैं अखिल सर और मैं एंड में आपसे पूछना चाहेंगे, आपके लास्ट थॉट्स क्या है, क्या बोलना चाहेंगी आज? ये मेरे पापा सुपर हीरो थे, बहुत प्राउड फील होता है, उसने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी. सुपर हीरोज डोंट ऑलवेज वेयर केप्स, दैट्स द सेइंग. और वो परवीना आपके अबू में, आपके पापा में नजर आता है. मेरे पापा सुपर हीरो थे. हम एंड में मैं सिर्फ मेजर अखिल से एक बहुत ब्रीफ में एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आपने ये एक पॉडकास्ट तो आपका है ही, बट यू आर ऑल्सो एन एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑन सोशल मीडिया. ये कहानियां, परवीना के पापा, सतपाल सिंह की अपनी कहानी, अर्जुन के फादर और पीटर और सैली के बेटे, हाउ डू वी कीप दी स्टोरीज अलाइव कि अगला जनरेशन जो पैदा भी नहीं था, जिनकी पैदाइश भी नहीं थी कारगिल के टाइम, वो कैसे ये स्टोरी जिंदा रही? Barkha, while working as a social media consultant with the Ministry of Defense and also on the jury panel of Ministry of Culture in Azadi Ka Amrit Mahotsav, I realized कि हम भारतीय, हमें ना एक ही पिक्चर को बार बार देखने का बड़ा मन करता है. अगर वो पिक्चर हिट हो गई तो हम बार बार उसी पिक्चर को देखते रहते हैं. हम कभी ये नहीं देखते कि अगर एक अमिताभ बच्चन था या है तो एक नसीरुद्दीन शाह भी है, उसको भी देख लो. क्या पता उसकी एक्टिंग उससे बेहतर हो, क्या पता उसकी कहानी उससे बेहतर हो, राइट? और मेरे को ये शिद्दत से लगता था, बल्कि मैंने इसको काफी टेकअप भी किया था 5 साल पहले भी, जब क्लिफी सर का और 13 सोल्जर्स का मैंने प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन पे किया था. वो भी मेरा बेंचमार्क था कि जो भी पॉपुलर नहीं है मैं उन्हीं को लूंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में तो हर आदमी तैर लेता है, पर वो असली तैराक वो होता है जो ज्वार भाटे में तैरे.
So that was the reason why I started doing stories on the unsung and untold heroes, जिसका इफेक्ट आज दिख रहा है. कारगिल विजय दिवस पर आज सेना मेडल गैलेंट्री हीरोज को दिखाया गया. सो आज की जनरेशन के लिए ये जो हम लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं वो इसलिए जरूरी है कि जैसे ऑडिबल पे ये जो मेरा पॉडकास्ट जो चल रहा है, मैं ही कहानी हूं, मैंने इसका नाम रखा इसलिए था कि सोल्जर्स के ऊपर स्टोरीज नहीं हो सकती, सोल्जर्स ही स्टोरी है. सो ये रहे अगर जहां पर ये होना चाहिए. जैसे बरखा आपके साथ भी हुआ था, एक बार यूट्यूब चैनल में आपके इशू आया था, सो आई सजेस्टेड कि भाई आप एक अपना वेबसाइट क्रिएट कर लो. तो ये जब रह जाएगा तो ऑनलाइन की ब्यूटी यही है कि ये रहेगा, कि पुराने रिकॉर्ड्स की तरह जल नहीं जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा. और आज की जनरेशन को सिर्फ गूगल करना पड़ेगा, अगर गूगल करना चाहें तो, वो कि भाई उस वक्त क्या हुआ था. द ओनली थिंग विच आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी इज दैट choose your website as you choose your battles. Not every information is correct. Not every data is correct. What you see over there, I've got tons of stories which I can say and I can keep on talking about them, which are totally incorrect, which are in the public domain. And Yes. लोग सब बह जाते हैं. हमने इतने रिकॉर्ड्स चेंज किए गैलेंट्री अवार्डीज की, कहीं फोटो गलत थी, कहीं पर नाम गलत था, बहुत कुछ किया है हमने और बहुत कुछ करना बाकी है. और मैं एक ही बात के ऊपर नोट एंड करना चाहूंगा बरखा, विद अगेन द सेम थिंग फॉर इंडियन आर्मी टू द वर्ल्ड, कि हमने माना कि हम आपसे बेहतर नहीं, पर हमारी महत्ता भी आपसे कमतर नहीं. हम गिर पड़े तो गिर पड़ोगे ए गगन चुंबी कलश, नींव के पत्थर हैं हम, राह के पत्थर नहीं. That summarizes Indian Army. Fabulous. Fabulous. My salutations today to Arjun, to Satpal Singh sir, to Pravina, to Peter and Sally, ma'am and sir, and to Major Akhil Pratap sir. Two things I would like to leave you, two programming notes that I want our audience to hear about and to watch out for. One is on our podcast this week on Inside Out, you will be able to meet the twin brother of Sher Shah Vikram Batra. Vishal Batra will be our podcast guest. And I hope that you will all join in and tune in. And this is Vishal's message. Hello everyone. This is Vishal Batra, the younger identical twin of Sher Shah of Kargil Captain Vikram Batra. I remember Vikram having written letters to me 24 years back from the battlefield, clearly mentioning that there are a hell lot of bullets and shells flying all around and the Indian Army is doing a fantastic job. This Kargil Vijay Divas week, I'm coming on Barkha Dutt's podcast Inside Out. And to watch my interview with her, subscribe to the Mojo Story. See you there. Ye dil mange more. Thank you for that, Vishal. And before we end, Major Akhil Pratap has regaled us with so many heartfelt stories, a beautiful mix of poetry, history, storytelling, and that's why he's both a soldier and a storyteller. We leave you with this excerpt from the podcast that he hosts on Audible. And I urge all of you to please follow this podcast and get more such fabulous stories as you have seen on this special edition of our program. ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. हरिवंश राय बच्चन के इन शब्दों से आज मैं अपने इस कार्यक्रम का अंत करता हूं. 20 कहानियां, 18 फौजी, 18 राज्य, 18 पलटने, 13 भाषाएं, 4 धर्म, 14 समुदाय, 40 आवाजें, एक भारत, एक उसकी सेना, एक मेरा शो और एक मैं उसका स्टोरी टेलर. द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ द फॉरगॉटन हीरोज ऑफ द कारगिल वॉर. आपने अगर गौर किया हो तो मेरे इस शो के हर एपिसोड का नाम फिल्मी है, क्योंकि उन फिल्मी किरदारों का हमारे असल किरदारों से गहरा संबंध है. मसलन ये एपिसोड, विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम है. फिल्म अग्निपथ के नायक का नाम था विजय, और हमारे इस एपिसोड अग्निपथ के नायक का नाम भी है विजय. ऑपरेशन विजय. जी हां, ऑपरेशन विजय में विजय हुई थी हमारे भारत की. फिल्म अग्निपथ का खलनायक था कांचा चीना,
हमारे इस एपिसोड का खलनायक चीना तो नहीं है, पर उसका भाई जरूर है, पाकिस्तान। और हाँ, अग्निपथ वो माध्यम है जिससे हमारे देश के युवा भारतीय सेना में आजकल भर्ती होकर अग्निवीर बनते हैं, समझा कि नहीं? डिटेल लाइन पोजीशन, लिम्बर अप, फायर, रेडी, टारगेट टारगेट, अपने समय पर सिंगल शॉट, पीस राउंड, फायर। They say that the first casualty of war is truth. जरूरी नहीं कि वास्तविकता वही हो जो आपके सामने है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और तभी सिक्के का सच सामने आता है। जरूरी नहीं कि सच वो हो जो आपका यकीन है। मेरा ये कार्यक्रम वैसी ही एक कोशिश है और मैं तहे दिल से अपने श्रोताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी इस कोशिश को सफल बनाकर इसे मोस्ट पॉपुलर पॉडकास्ट का दर्जा दिया। माई ग्रेटफुल एक्नॉलेजमेंट टू ऑल ऑफ यू। Thank you. Again, greetings on Kargil Vijay Divas and Jai Hind to all of you. And to Jai Hind. Jai Hind. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.